Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Giridhari Gopi Janavallabha Giridhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Giridhari Gopi Janavallabha Giridhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Bhavnamrut Parivrajaka Astutur Shata Shri Shimad. His Divine Grace Srila Bhai Charna Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai.
Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astatar Shata Shri Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Srila Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Ananta Kurti Vaishnavrinda Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Radhagiri Dariji Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai Tagore Premanande Hari Hari Bol. All glories to these Samul devotees, Hare Krishna. All glories to these Samul devotees, Hare Krishna. All glories to these Samul devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudiraya Nasta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 81, text number Das. The Lord blesses Sudama Brahmana. Someone is translating? और हम लोग श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में श्लोक संख्या 10 को हम पढ़ने जा रहे हैं। Itam vinchitya vasanaj Itam vichintya vasanaj. There's different shlok here, huh? Okay, sorry. I'll just read this first. Chirha bhadhan dvijanmanaha svayam jahara kim idam iti pukuta tandulan. Thinking like this, the Lord snatched from the Brahmana's garment the grains of flat rice tied up in an old piece of cloth and exclaimed, "What is this?" इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे तंबुल के दानों को छीन लिया और चिल्ला उठे, यह क्या है? Text 9. Shlok no. Navetad upanitam me parama priyanam sake
Tarpantyanga mam vishvam ete pitunka tandulaha. My friend, have you brought this for me? It gives me extreme pleasure. Indeed, these few grains of flat rice will satisfy not only me, but also the entire universe. हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह तंदुल के ये थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। Purport. Srila Prabhupada writes in Krishna, the Supreme Personality of Godhead, it is understood from the statement that Krishna, being the original source of everything, is the root of the entire creation. As watering the root of a tree immediately distributes water to every part of the tree, so an offering made to Krishna or any action done for Krishna is to be considered the highest welfare work for everyone, because the benefit of such an offering is distributed throughout the creation. Love for Krishna becomes distributed to all living entities. तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष की प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण के लाभ को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। Text 10. Shlok Das. Kripaya mere piche boliye. Iti mushtim sukrit jagdvaha. Iti mushtim sukrit jagdvaha. Dvitiham jagdum adade. Dvitiham jagdum adaye. Dhavatshir jagrahe hastam. Dhavatshir jagrahe hastam. Tatpara parameshtinaha. Tatpara parameshtinaha. Iti mushtim sakrit jagdvaha. Dvitiyam jagdum adade. Tavatshri jagrahe hastam. Tatpara parameshtinaha. Iti mushtim sakrit jagdvaha. Dvitiyam jagdum adade. Dhavatshri jagrahe hastam. Tatpara parameshtinaha. Please chant. Iti mushtim sakrit jagva. Dvitiyam jagdumadade. Tavatshri jagrahe hastam. Tatpara parameshtinaha. Iti mushtim sakrit jagva. Dvitiyam jagdumadade. Tavatshri jagrahe hastam. Tatpara parameshtinaha. Iti mushtim sakrit jagvaha. Dvitiyam jagdumadade. Tavatshri jagrahe hastam. Tatpara parameshtinaha. Vaishnavis.
iti mustim sakrits jagva dvitiyam jagdumadade tavat shri jagvehe hastam tatpara paramestinaha iti mustim sakrits jagva dvitiyam jagdumadade tavat shri jagvehe hastam tatpara parameshtinaha. Can you do the word for word and translation and the purport? Iti ऐसा कहकर sakaka मुस्लिम मुट्ठी भर mutika सत्कृत sakrita एक बार ekada जगद्भा jadagva खाकर kaka द्वितीयम दूसरी दूसरे जगधुम jagdum खाने के लिए खाने के लिए आददे लिया तावत तब तो kavako श्री श्री लक्ष्मी रुक्मणी देवी ने जगग्रहे पकड़ लिया हस्तम हाथ तथा उस परा अनुरक्त परमेष्ठिनः भगवान यह कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि पति परायणा देवी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तात्पर्य, महारानी रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ तंदुर खाने से इसलिए पकड़ लिया जिससे वे और अधिक न खाएं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार इस संकेत द्वारा वे भगवान को बता देना चाहती थी कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अपार धन मिल सकता है तो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है, लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े, जो कि आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर हो जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि रुक्मणी द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव यह है कि यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए इन सारे कंसों को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियाँ, सौतों, नौकरों तथा मेरे लिए क्या बचेगा। तब तो हम में से किसी को एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने संकेत द्वारा अपनी नौकरानियों से कहा, इन कड़े चावलों से मेरे स्वामी का मुलायम पेट बिगड़ जाएगा। श्री प्रभुपाद की टीका है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं तो रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी है उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो उठती हैं कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वात्म वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उसके घर की अतिथि बनती हैं, जिसका अर्थ है कि उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। इति मुस्तिम सकृच जग्वा द्वितीयम जगदुमादये तवत्स्त्रिय जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। ओम ज्ञानचुनन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च
Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So it's my great honor and pleasure to be here this morning in Iskcon Valavidyanagar, Shri Shri Radhagiri Dariji Mandir. Haribol. मुझे बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि श्री श्री राधा जी हरि मंदिर प्रगट विद्यानगर में आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। And yesterday we put Ananta Shesh in the ground in the new temple premises. तो कल हमने अनंत शेष को स्थापित किया नौ मंदिर निर्माण के लिए। And I hope that very soon we can have Srimad Bhagavatam class in the new mandir. और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही श्रीमद् भागवत कक्षा नए मंदिर प्रांगण में होगा। This will be a great blessing and give great pleasure to all the devotees. तो यह भक्तों के लिए बहुत ही आशीर्वाद और प्रसन्नता का विषय है। Anyway, this temple is also very nice. और यह मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। And even we can give Bhagavatam class under a tree. यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो हम भागवत कक्षा पेड़ के नीचे भी बैठकर दे सकते हैं। But opulent temple is better. और उसके तुलना में यह मंदिर तो बहुत अच्छा है। Why is opulent temple better? तो हमें जो है नए मंदिर की इतनी सुंदर आवश्यकता क्यों है? One time Srila Prabhupada was talking to a reporter. तो एक बार श्री प्रभुपाद एक पत्रकार से बात कर रहे थे। It was in a 5-star hotel. और वह जो है 5 सितारा होटल था। The reporter said, "You are a renunciant. तो रिपोर्टर ने कहा कि आप तो जो है बैरागी हैं। Then why are you staying in 5-star hotel?" तो आप इस 5 सितारा होटल में क्यों ठहरे हुए हैं? Srila Prabhupada said, "I could stay under a tree, प्रभुपाद ने कहा मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ। but who would come for the press conference?" लेकिन वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन आएगा? Srila Prabhupada ki jai. So Srila Prabhupada is using the opulence of the goddess of fortune throughout Iskcon, making opulent centers. तो श्री प्रभुपाद ने समस्त ऐश्वर्य का उपयोग किया भगवान की सेवा के लिए। So that many people will be attracted to Krishna consciousness. जिससे कि अधिकाधिक संख्या में लोग जो थे कृष्ण भावना के प्रति आकर्षित हो सकें। They'll be benefited. और इसकी सुविधा के लिए They'll get prasadam. प्रसाद के लिए They'll get Bhagavatam. और वहाँ पर भागवत कक्षा होगी। And they'll get the holy names. और वहाँ पर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण होगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So today we're reading Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 81, entitled Lord Blesses Sudama Brahmana. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय 81 भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान इसका अध्ययन कर रहे हैं। Texts 8 through 10. और श्लोक संख्या 8 से 10 तक। So in this section of Srimad Bhagavatam, we hear about Sudama Brahmana. तो इस अध्याय के अंतर्गत हम ब्राह्मण सुदामा के बारे में हम सुन रहे हैं। And Sudama and Krishna, they were friends from the childhood. तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन से ही मित्र थे। They went to the Sandipani Muni's school together तो वे सांदीपनि मुनि के स्कूल में एक साथ गए थे in Ujjain, उज्जैन में। and Balaram was also there. और बलराम जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। So many children were there. और वहाँ पे अन्य बालक भी उपस्थित थे। And Sandipani Muni was the guru. He was guiding them, teaching them. तो सांदीपनि मुनि उन सभी को जो है नेतृत्व कर रहे थे, उनको शिक्षा दे रहे थे। So Krishna says in Bhagavad Gita that we should do seva for the guru. तो
भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। Chapter 4, text 34. अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshanaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual masters. तो सत्य जानने का प्रयास के लिए जो है भक्तों को के द्वारा Inquire from them submissively और जिन्होंने तत्व को जाना है उनके द्वारा पूछकर and do seva, render seva to them. और उनकी सेवा करके Upadekshanti te jnanam, they can give you knowledge और वो आपको ज्ञान प्राप्त because करेंगे, tattva darshanaha, they have seen the truth. क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। So Krishna is there with Sudama, तो भगवान कृष्ण वहाँ पर सुदामा के साथ थे and one day Sandipani Muni says, go and bring some wood for the fire. तो एक दिन सांदीपनि मुनि ने उन्हें आज्ञा दिया कि आप जो है यज्ञ के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जाएं, Bring some lakari. लकड़ी लाने के लिए। So then Sudama and Krishna, they go to the forest तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जो है जंगल में गए to bring the lakari. और वहाँ पर लकड़ी लाने के But लिए, then it becomes a storm. लेकिन वहाँ पर तूफान आ गया The clouds get very dark और बादल बहुत काले काले बादल आ गए and you can hear thunder sounds. और जो है बिजली की चमक और आवाज आने लगी And then it started to rain. और फिर बारिश होने लगी And then there was wind. और जो है हवाएं चलने लगी And it became very cold. और फिर बहुत ही ठंड का मौसम हो गया So it was dark. और चारों तरफ अंधेरा छा गया। Sudama and Krishna, they could not find their way back to Sudama's ashram. तो Sorry, सुदामा to Sandipani Muni's ashram. तो भगवान और सुदामा जो है पुनः सांदीपनि मुनि आश्रम को लौटने का रास्ता नहीं पा रहे थे All night they were out in the rain and the wind and the cold. और वह पूरी रात वहाँ पर हवा ठंड और बारिश में वहाँ रुके रहे They were shivering. और वे ठिठुर रहे थे And they were embracing each other to try to stay warm. और वो एक दूसरे का आलिंगन करके कर रहे थे जिससे कि गर्म रहे। Next morning, Sandipani Muni is where's Krishna? Where's Sudama? तो अगले दिन सांदीपनि मुनि ने देखा कि सुदामा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, All the ashram, they go out looking for them. और पूरे आश्रम में उन्हें ढूंढने लगे They find them, they bring them back to the ashram. और वो उन्हें वहाँ पर ढूंढ नहीं पाए And Sandipani Muni blesses them. और जब जो है उन्होंने जंगल में भगवान को देखा और जब वापस आए तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। So because Sudama and Krishna, they were doing seva together for their guru, they developed a very strong friendship. क्योंकि सुदामा और कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा के लिए एक साथ मिलकर सेवा किया जिससे कि उन्होंने अच्छी मित्रता विकसित कर दी। So from this we can learn a very important lesson, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा सीखने को मिलती that है। we should develop very strong friendships amongst the devotees. हमें भक्तों के बीच में एक बहुत ही दृढ़ मित्रता रखनी चाहिए By serving the Guru's mission together. अपने गुरु के मिशन की और सेवा करने के लिए। This is called sadhu sangha. और इसे ही साधु संघ कहते हैं। Utsaha nishchayat dharyat tat tat karma pravartanat sangha tyagat satovrite shadbhir bhaktir prasidati. When we engage in these 6 activities that encourage us, that are healthy for bhakti, together with other devotees, we become inspired and our friendships become very strong. तो जब हम यह 6 कार्य करते हैं जो कि भक्ति को बढ़ाने वाले हैं तो उनके द्वारा हमें भक्तों के बीच में एक दृढ़ और प्रगाढ़ संबंध विकसित होता है। Srila Prabhupada told us, engage in the 9 processes of bhakti. तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति के 9 अंग को विकसित करें। Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. He said we should do this together. This is sadhu sangha. तो
तो प्रभुपाद ने कहा कि इन 9 भक्ति को हम एक साथ करें, यही साधु संग है। If we go to the cinema with some devotees, that's not sadhu sangha. अगर हम किसी भक्त के साथ सिनेमा देखने जाएं तो वह साधु संग नहीं है, It's not bhakti. वो भक्ति नहीं है। Bhakti means to come together, तो भक्ति का मतलब है कि हम एक साथ आएं serve the Lord, और जो है भगवान की सेवा करें and chant the holy names. और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Sudama and Krishna, they grew up. तो इस तरह सुदामा और कृष्ण जब बड़े हुए, Krishna went to Dwarka. तो भगवान कृष्ण द्वारिका गए Sudama got married also. और सुदामा ने ये विवाह किया। Now Sudama was very poor. सुदामा जो है बहुत ही गरीब थे And his wife was saying, Krishna is Dwarkadish. Why don't you go and ask your old friend Krishna for some help financially? तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि भगवान आपके मित्र हैं, तो आप द्वारिका जाकर उनसे कुछ मदद क्यों नहीं मांगते। So Sudama was not very inspired to ask Krishna for any material help. तो सुदामा जी को कोई रुचि नहीं थी भगवान से कोई भौतिक चीजें मांगने के लिए, Because the mood of the devotee is he does not want to ask Krishna for anything material. तो जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान से कोई भौतिक चीजें मांगने में रुचि नहीं रखते हैं। Sometimes our Christian friends, they go to the church and they pray, oh dear God, please give us our daily bread. तो महाराज कह रहे हैं कि उनके कुछ क्रिश्चियन मित्र थे, तो वो चर्च में जाकर ऐसी प्रार्थना करते थे कि कृपया मुझे जो है प्रतिदिन की रोटी दीजिए। But this is not the mood of pure devotion. लेकिन यह जो है भक्तों का पवित्र भाव ऐसा नहीं होता है। Krishna is giving the elephant 300 kgs of grass and leaves every day. भगवान जो है यहाँ हाथी को भी प्रतिदिन जो है 300 किलो घास प्रदान करते हैं खाने के लिए। If Krishna is feeding the hathi, why Krishna will not feed his aspiring devotees? तो भगवान यहाँ तक कि हाथियों को भी खाने के लिए देते हैं, तो हम भक्तों को क्यों नहीं देंगे? So the mood of the devotee is ahoitaki bhakti. He does not want anything in return. तो भक्तों का भाव होता है कि वह भगवान से वापस कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। The devotee only wants to serve and please the Supreme Lord. भक्त जो है केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। Anya bilasita shunyam dhyana karma anavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutama. That the devotee, he doesn't want any fruit of return from his service. तो जो भक्त है वह अपनी सेवा के बदले में उसका कोई फल प्राप्त नहीं करना चाहता। He doesn't want any kind of liberation. वह किसी भी प्रकार की मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। He just wants to serve the Lord. वो केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। And the devotee is also happy to see the Lord. और जो भक्त हैं वो भगवान को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। So Sudama's wife, she said, why don't you go and see Krishna? He's so wealthy. He'll give you some money. तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आप जो है द्वारिका नगरी क्यों नहीं जाते? आपके मित्र जो है बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। So Sudama was thinking, yeah, I can have Krishna's darshan. That is nice. तो सुदामा जी ने सोचा कि हाँ, जाने पर भगवान के दर्शन जरूर मुझे प्राप्त होंगे। And he said, what can I bring for the Lord? तो सुदामा जी ने कहा मैं भगवान के लिए क्या लेके जाऊँ? But he was so poor. क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। They didn't have anything very nice. उनके पास कोई भी अच्छी वस्तु नहीं थी। So Sudama's wife took some chipped rice. तो सुदामा की पत्नी ने एक तंदूर उनके लिए लिया। Very old chipped rice. वो बहुत ही पुराना जो है चावल था। Very dry chipped rice. और बहुत ही सूखा था। And wrapped it in a new cloth. और उसको जो है एक कपड़े में लपेटकर। And Sudama kept that chipped rice with him. और सुदामा जी ने उसे अपने पास रख लिया। And then he went to Dwarka. और वो फिर द्वारिका गए। And he met Lord Krishna. और वहाँ पे जाकर वो भगवान से मिले। And Krishna was so happy to see him. और भगवान भी उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। He took him into his own quarters, his own room. और उन्होंने अपने निजी कक्ष में लेकर गए। Sat him on his bed. और उन्हें अपने जो है बिस्तर पर बिठाया। Washed his feet. और उनके चरणों को धोया। Rukmini Devi is fanning him. और रुक्मिणी देवी उनको चावल खिला रही थी। And now we come to this section here. और
और वह यह बात यहाँ पर प्रस्तुत है। Because Sudama, he even forgot about the chipped rice. और सुदामा जो है वह भूल गए थे कि उनके पास तंदूर है। So, earlier in the chapter, it's mentioned this one beautiful shloka from Bhagavad Gita. तो श्रीमद् भगवद गीता में भी बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया गया है। Because Krishna says, "What gift have you brought me from home?" तो सुदामा जी ने कहा कि आप मेरे लिए घर से क्या लेकर आए हैं? I regard as great even the smallest gift offered by my devotees in pure love. भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त के द्वारा अर्पित किया गया थोड़ा सा भी वस्तु मुझे बहुत ही प्रसन्नता देती है। But even great offerings presented by non-devotees do not please me. और यहाँ तक कि अन्य लोगों के द्वारा बड़े से बड़ी चीजें अर्पित करने पर भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती है। We hear about Duryodhana offered big feast for Krishna. तो हम सुनते हैं कि बहुत बड़े-बड़े जो फीस्ट जो है वो भगवान को अर्पित किए जाते He हैं। was not interested. लेकिन वह भगवान उसमें रुचि नहीं रखते हैं। But then Vidura's wife offered him banana peels. लेकिन जब विदुर की पत्नी ने भगवान को जो है केला अर्पित किया, And then Krishna was happy to eat those. तो भगवान वो केले के छिलके भी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक पाए। Kyo? क्यों ऐसा क्यों है? Because it was offered with love. क्योंकि वह जो है प्रेम के द्वारा अर्पित किया गया था। Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktya paritam ashnami prayatatmanaha. Krishna says, if one offers me with love and devotion, a leaf, a fruit, a flower, or water, I will accept it. तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम करता भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल और फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। But Sudama Brahmana, he was embarrassed. How can I offer this karab chipped rice? लेकिन सुदामा जो है वो बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे थे कि भगवान को यह तंदूर मैं कैसे भेंट करूं। He was thinking, this is not good enough offering. तो वो ऐसा सोच रहे थे कि यह भगवान को अर्पित करने के लिए अच्छा नहीं है। But sarvasya chahamriti sannivastaha, Krishna is in everyone's heart. लेकिन भगवान जो सभी के हृदय में वास करते हैं, He could understand there was something in Sudama's pocket. तो वह तुरंत ही समझ गए कि सुदामा की पोटली में जरूर कुछ है। So he knew that Sudama never worshipped him for any material gain. तो भगवान जानते थे कि सुदामा जो है वह किसी भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए मुझे नहीं पूछता है। But in this case, he was coming on behalf of his wife. His good and chaste wife had asked him to come. लेकिन वह जानते थे कि इस समय वह अपने पतिव्रता पत्नी के कहने पर यहाँ पर आए हुए हैं। So then Krishna had a desire to give Sudama great opulences. तो भगवान चाहते थे कि वह सुदामा को जो है कुछ भौतिक संपदा दें। So then we come to text 8 today. तो अभी हम टेक्स्ट श्लोक संख्या 8 पर आ गए हैं आज के। So the Lord physically snatched the rice from the cloth of the Brahmana. तो भगवान ने जो है वह सुदामा के पास जो वस्त्र की पोटली थी वो खींच लेते हैं। And he said, "What is this? और कहते हैं ये क्या है? Ye kya hai? My friend, you have brought this for me? हे मेरे क्या तुम इसे मेरे लिए लाए हो? It gives me extreme pleasure. यह मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाली है। Indeed, these few grains of flat rice will satisfy not only me, but also the entire universe." तो यह तंदूर के ये थोड़े से दाने हैं न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को संतुष्ट करने वाले हैं। Now, it's very interesting in the purport today. Bless you, bless you. It said in the purport today that if one offers to Krishna, the entire universe benefits. तो तात्पर्य है कि अगर भगवान को थोड़ा सा भी अर्पित किया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड उससे संतुष्ट हो जाता है। When you pour water in the root of the tree, all the leaves and fruits and flowers of the tree are nourished. तो अगर हम वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं तो वृक्ष के पत्ती, फूल, टहनी सभी जो है वह संतुष्ट हो जाते हैं। So if we make an offering to Krishna, then it's not just us that benefits, the entire universe benefits. तो अगर हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो केवल हमें संतुष्टि नहीं
फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। That's why performing Harinam Sankirtan is so important. इसीलिए यह जो हरि नाम संकीर्तन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Shreya Kairava Chandrika, that the white lotus of good fortune will open not just for us but for everyone by this performance of Harinam. तो यह जो हरि नाम संकीर्तन का जो है पूर्ण जो चंद्र है वह केवल हमें नहीं बल्कि सभी जीवों को जो है शीतलता प्रदान करने वाला है। Therefore we should perform Harinam Sankirtan. और इसलिए हमें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the purport, Srila Prabhupada mentions, because he's quoting Krishna, Supreme Personality of Godhead. This is Prabhupada's words. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। यह प्रभुपाद के शब्द हैं। Love for Krishna becomes distributed to all living entities. तो भगवान का जो प्रेम है वह सभी जीवों को जो है वितरित होता है। So, after he said this, Lord Krishna put his hand in the chipped rice and he ate one palmful of chipped rice. तो भगवान ने सुदामा की पोटी से जो है एक मुट्ठी तंदूर लेकर उसे तुरंत ही खा लिया। And he was going to eat a second one. और वह दूसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे। But Rukmini Devi stopped him. लेकिन रुक्मिणी देवी ने उन्हें रोक लिया। And in the purport today, we hear many things about Rukmini Devi. तो आज तात्पर्य में हम रुक्मिणी देवी के बारे में कई तथ्यों को पढ़ते हैं। We heard that she took hold of Krishna's hand to stop him from eating second bite. तो हमने देखा कि यहाँ पे रुक्मिणी देवी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया, उन्हें रोका दूसरी मुट्ठी खाने के लिए। And Sridhar Swami tells why she took Krishna's hand. और यहाँ पर श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि उन्होंने भगवान का हाथ क्यों पकड़ा। Because she's telling the Lord, और वह बताते हैं this much of your grace is sufficient to assure anyone vast riches, which are merely the play of my glance. तो बताते हैं कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अपार मिल सकता है जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है। Yeah, so Krishna takes one bite, then that one bite is enough to assure anyone of vast riches. तो भगवान ने जो एक मुट्ठी खाई वह जो है किसी भी व्यक्ति के लिए जो है एक संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो सकता है। But what about two bites? तो अगर दूसरी मुट्ठी खाए तो क्या होगा? Then Lakshmi Devi, Rukmini Devi becomes the servant of that person. तो अगर दूसरी मुट्ठी खाते तो लक्ष्मी देवी जो है वह सेविका बन जाती। And she was not ready for that. लेकिन लक्ष्मी देवी उसके लिए तैयार नहीं। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains why she took hold of the Lord's hand. तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी व्याख्या करते हैं कि लक्ष्मी देवी ने भगवान के हाथ को क्यों पकड़ा। It's because she also wanted some of that rice. क्योंकि वह भी कुछ उसका कुछ भाग। She said, if you eat all of this wonderful treat, then what will I have left for my friends, your co-wives, the servants, and myself? तो उन्होंने कहा कि अगर आप सब खा जाएंगे तो हमें हमारे सेवक सेविकाओं को हम क्या प्राप्त होगा? Just like when Chaitanya Mahaprabhu, he saw Raghunath Das Goswami eating that old rotten rice from the Kalinga cows in Jagannath Puri. There was rotten Mahaprasadam. तो जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि गायों को खाने वाला जो चावल था जब वो खा रहे थे तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया था। And then Mahaprabhu grabbed it and ate it. और महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर खींचकर वह खा लिया। And then he was going to take more. और वह फिर दोबारा खाने के लिए बढ़े। And then Srup Damodar said, no, my Lord, it is not fit for you. लेकिन रघुनाथ दास ने कहा कि नहीं प्रभु ये आपके लिए योग्य नहीं है। But Lord Krishna, Lord Chaitanya, they appreciate the love and devotion, even if it's the food stuff is not first class, but it is the love and devotion that is important. तो श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण जो कि एक ही हैं, वह बहुत ही पसंद करते हैं भक्त का भाव, यद्यपि कि वह खाने योग्य नहीं होता है, फिर भी उनके प्रेम भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। Vishwanath Chakravarti Thakur continues. तो विश्वनाथ
पुनः चक्रवर्ती ठाकुर आगे व्याख्या करते हैं। He says that when she took Krishna's hand, she was indicating to her maidservants that if Krishna eats this hard rice, his stomach petor karab ho jayegi. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसी व्याख्या करते हैं कि रुक्मिणी देवी जो है अपनी सेवकाओं को कहती हैं कि अगर भगवान ये खा लेंगे तो भगवान का जो पेट है वो खराब हो जाएगा। Srila Prabhupada comments that when food is offered to Lord Krishna with love and devotion, and he is pleased and accepts it from the devotee, तो श्री प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित किया जाता है तो वह प्रसन्न होकर भक्त भी इसको स्वीकार करते हैं। Rukmini Devi, the goddess of fortune, becomes so greatly obliged to the devotee that she has to personally go to the devotee's home to turn it into the most opulent home in the world. तो रुक्मिणी देवी जो कि स्वयं लक्ष्मी हैं उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ होती हैं कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। If one feeds Narayana sumptuously, the goddess of fortune Lakshmi automatically becomes a guest in one's house, which means that one's home becomes opulent. तो यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उसकी अतिथि बनती हैं, जिसका अर्थ है उनका घर वैभव से युक्त हो जाता है। So therefore in our home it's very important that we make the best offering as possible to the Lord Narayana. तो इसीलिए हमें अपने घरों में यह प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। And if we serve the Lord nicely, then Lakshmi Devi will come and she will make our homes very, very opulent. तो अगर हम इस तरह भगवान को जो है सेवा करेंगे तो लक्ष्मी देवी हमारे घर की अतिथि बनेगी और वहाँ पर निवास करेंगी। Why is it nice to have an opulent home? तो ऐसा क्यों है कि हम ऐसा सुंदर घर क्यों नहीं चाहते हैं? So that we can offer more service to the Lord. तो हम इसलिए चाहते हैं कि हम भगवान को अधिकार और सेवा कर सकें। Our family members will be happy and satisfied. और हमारे परिवार के सभी सदस्य भी प्रसन्न रहें और संतुष्ट रहें। And they will be inspired to render devotional service to the Lord. जिससे कि वह भी भगवान की सेवा के लिए प्रेरित रहेंगे। So I am going to stop here and ask if there are any comments or questions. तो महाराज यहाँ पर अभी समाप्त करेंगे और अगर किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो Because पूछ सकते हैं। Because Lord Krishna has stolen that chipped rice. तो यहाँ भगवान ने जो है चुरा लिया वह राइस को। Just like Bal Krishna, he steals the butter from the gopis. जैसे कि बाल कृष्ण जो है वह गोपियों से माखन चुराते हैं। So here Krishna has stolen the chipped rice from Sudama. तो यहाँ पर भगवान ने सुदामा से जो है वह कंदुल चुरा लिया। Because by receiving that love of Sudama, of the gopis, then Krishna is able to give the mercy and make them very, very opulent. तो इस तरह जो है गोपियाँ के भाव में और यहाँ पर सुदामा को भगवान जो है उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उनको समस्त ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। Hare Krishna. हरे किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? Yes, Prabhu. He's asking that during the childhood, when they went to forest, Krishna and Sudama together, so he heard that there Sudama had eaten some some food stuff that was given to both, but Sudama had eaten alone. So this is the reason that Sudama becomes poor. I never heard that myself. हमारा parents इन्होंने स्वयं ऐसा सुना नहीं है। Where did you hear this? तो यह आपको कहाँ से? Did you read it in Bhagavatam? क्या यह भागवतम में वर्णित है? Or were you watching some serial on TV? या आपने
जैसे कि जो है टीवी सीरियल में देखा है। Don't know. हम्म। Okay, find out, then come back to me again. तो आप इसे ढूंढिए और फिर दोबारा मेरे पास आइए। Anyone has heard this also? Yes, you heard? You heard it serial. Okay, so we cannot necessarily accept the serial as praman. तो हम जो है सीरियल को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। We accept praman from three sources: तो हम प्रमाण जो है मतलब 3 स्रोतों से स्वीकार करते हैं। Guru, गुरु, Sadhu, साधु and Shastra. और शास्त्र से। Serial. No, serial is not there. सीरियल सीरियल से नहीं। Okay. So sometimes serial may be correct, तो कुछ समय सीरियल में भी सही दिखाते हैं, but only if serial is agreeing with Guru, Sadhu, and Shastra. लेकिन अगर वह गुरु साधु शास्त्र के अनुकूल हो तो। And Shastra is a mool. Shastra is the most और important. जो शास्त्र है वह मूल है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। So spend less time watching the serials and more time reading the Shastras. तो सीरियल कम समय देखें और शास्त्र का अधिक समय करें। Does that answer your question? क्या प्रश्न का उत्तर मिले? Yes, thank you so much. Hare Krishna. Or kuch chahiye? Yes, Prabhu, go ahead. When Krishna went to eat the second time divide, Yeah, and Mata Rukmani is called, yeah. and so the reason is that if Krishna if gets second bite, the particular person become more wealthier, and Lakshmi Mata and become the servant, but the particular person becomes the more wealthier because of the mercy of the Krishna. How it is equivalent to the Krishna that the particular Lakshmi Mata goes to be servant of that person? Thank you for your question. Thank you for your question. Bahut dhanyawad aapka prashna. I will try to see if I understand your question. तो महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने जो समझा है आपके प्रश्न को। So your question is regarding Krishna is trying to eat second handful of rice. तो महाराज कह रहे हैं आपका प्रश्न ये है कि जो भगवान जो है जो दोबारा मुट्ठी खाने का प्रयास कर रहे हैं And Rukmini is stopping him. और रुक्मिणी जी ने उन्हें पकड़ लिया उनके हाथ को। So your question is regarding the difference between a spiritual person and a material person. तो आपका क्या प्रश्न आध्यात्मिक और भौतिक व्यक्तित्व के लिए है? That sometimes a material person may gain wealth, तो कई बार जो है भौतिक व्यक्ति जो है वह धन प्राप्त करता है and a spiritual person may also sometimes gain wealth. और कई बार जो है आध्यात्मिक व्यक्ति भी कुछ धन को प्राप्त करता है। So if I understand your question properly, you're asking what is the difference? Why does a spiritual person gain wealth and why does a material person gain wealth? तो जहाँ तक महाराज ने आप प्रश्न को समझा है वह यह है कि कभी आध्यात्मिक व्यक्ति को और कभी भौतिक व्यक्ति को वह धन क्यों प्राप्त होता है? Is that your question? क्या यह प्रश्न? No. What is your question? आपका प्रश्न है। You have to come a little, give him the mic, I cannot hear him properly. Mata Rukmani stops the Krishna's hand because the second bite if Krishna is, then the person, the world will become more wealthier and Wait. Let's see if I understand that. You're saying that Rukmini stopped Krishna's hand because Sudama would become more wealthy. Is that your point? No. Okay. Please ask your question in one line. Start with a what, who, why, how, and end with a question mark. Rukmani Mata stops the hand because the second Don't tell me, ask me a question. Why? How? What? मतलब रोका इसलिए क्योंकि more wealthy बन जाएंगे लोग और माता लक्ष्मी की servant बन जाएगी तो वो नहीं बनना चाहती थी। तो कोई भी पर्सन भगवान के बराबर कैसे बन सकता है? What is his question?
He asking that because Mata Lakshmi has stopped to eat with the second hand rice. So, because it's mentioned that Mata Lakshmi become servant to that Sudama. Yeah. So he is asking that how it will happen that any person can become more wealthy than Lord or Mata Lakshmi. You're asking how can someone become more wealthy than Mother Lakshmi? Equivalent to God. Equal to Lord. It's not written anywhere that someone will become equivalent to God. तो यह भागवत में ऐसा कहीं लिखा नहीं है और महाराज जी ने भी ऐसा कहीं बोला नहीं. God is God. भगवान तो भगवान ही है. God does not become God. तो भगवान बनते नहीं हैं. नहीं, इसमें लिखा नहीं. So one will become very wealthy तो जो है वह अगर बहुत धनी बनेगा तो by serving God, अगर भगवान की सेवा करते हुए, but one will never become as wealthy as God. तो वह कभी भी भगवान के बराबर का धनी नहीं बन सकता है. The Lord is Shad Aishwarya Purna. तो भगवान जो है शायद ऐश्वर्य में पूर्ण रूप में He's है. called Bhagavan. इसीलिए वो भगवान है. Bhagavan means he's filled with 6 opulences. भगवान का मतलब है कि वह शायद ऐश्वर्यों से पूर्ण है. He's the most powerful person. वो सबसे अधिक शक्तिशाली है. No one is more powerful than him. उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं. He's the most beautiful person. वो सबसे सुंदर है. No one is more beautiful. उनसे सुंदर कोई नहीं. He's the most famous person. वो सबसे प्रसिद्ध है. No one is more famous. उनसे कोई प्रसिद्ध नहीं. He's the most intelligent person. वो सबसे जो है विद्वान है. No one is more intelligent. उनसे ज्ञान विद्वान कोई नहीं है. He's the most renounced person. और वो सबसे अधिक वैरागी है. No one is more renounced. उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं. And he's the most wealthy person. और वो सबसे धनी भी होती है. No one is more wealthy than he उनसे is. धनी कोई नहीं हो सकता. So anyone who has these 6 opulences in full is Bhagavan. तो जिसे यह 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में प्राप्त हैं वो भगवान है. So we can never become that position. तो हम कभी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते. Lakshmi Devi can give so much wealth and so much opulence, तो लक्ष्मी देवी बहुत ही धन संपदा दे सकती हैं, but not the equivalent of Lord Krishna. लेकिन वह भगवान के बराबर नहीं दे सकती. Does that address your point? क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला? Yeah? Okay, thank you so much. Hare Krishna. So thank you very much for your kind attention this morning. May aap sab bahut abhari hoon. Thank you so much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you for translating. Oh, I have some good news for all of you. I just came from Sri Vrindavan Dham, and I brought with me Mahaprasadam, Sri Vrindavan Dham.